गाइस देयर, ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रिलेशन दिख रहा है हमें बताओ। आई और R1 का रिलेशन क्या होगा? अनम्यूट करो, फटाफट बोलते जाओ। I is no relation between what? I and R1। भाई बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की तुमने, बिल्कुल। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? What is happening here? The light is coming here and It's bending towards the normal. what is this phenomena called? Diffraction. So अब रिफ्रैक्शन हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये R1 है, तो क्या रिलेशन इनके बीच में? Sin I by sin R1 is equal to. Okay, Kaveri, unmute and give all the answers now. Yeah. ये ठीक है, sin I upon sin R1 is equals to हाँ? I don't know. अरे ये तो पहली क्लास थी भाई, तो फिर कैसे पढ़ेंगे हम कुछ भी रिफ्रैक्शन में? Forgot, sir. स्नेल्स लॉ मैंने पढ़ाया था, μ1 sin θ1 equals to μ2 sin θ2। Yeah. Sorry. Yeah. भाई ऐसे नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि अभी तो हम 2-3 और चैप्टर्स करने वाले हैं। डोंट क्रिएट अ बैकलॉग, जो चैप्टर हो रहा है उसी दिन उसको प्रैक्टिस करो, नहीं तो बहुत बहुत एंजाइटी होगी एंड में। ये तो 10th का है ना, ये तो इस क्लास का भी नहीं है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये कौन सा लॉ कहलाता है? व्हाट इज दिस लॉ कॉल्ड? Snell's. हाँ, स्नेल्स लॉ। सो आई और R1 का ये रिलेशन हो गया। वैसे इधर क्या रिलेशन होगा R2 और E का? Sin E by sin R2 is equal to mu. बट लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? लाइट तो Sorry, sin R2 by sin E is equal to इज इक्वल्स टू mu, na? आर्या, इज दैट करेक्ट? Yeah, should be. बहुत तकलीफ है यार, एक तो मुझे समझ नहीं आता, मैं जो तुम लोग को बताता हूँ तुम लोग फॉलो क्यों नहीं करते हो। व्हाई डू यू गेट स्टक ऑन टू रॉन्ग थिंग्स? एक ही चीज पढ़ाई मैंने, बार बार मैंने कहा था स्नेल्स लॉ, μ1 sin θ1 इक्वल्स टू μ2 sin θ2 लेना, अदरवाइज हमेशा ये तुम्हें कंफ्यूजन रहेगा कि ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा। नॉर्मली ग्रेड 10th में हम हमेशा लाइट को पास करते थे रेयरर से डेंसर की, बट जब भी लाइट डेंसर टू रेयरर जाती या 2-3 मीडियम में जाती, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि ऊपर कौन सा म्यू रहेगा, नीचे कौन सा म्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या सिखाया, μ1 sin θ1 इक्वल्स टू μ2 sin θ2। यहाँ पे लगाओ उसको और मुझे बताओ क्या रिलेशन बनेगा। Sin R2 by sin E is equal to mu2 by mu1. μ2 क्या है? ये अंदर जो प्रिज्म बना है ये म्यू का है, और बाहर 1 है म्यू, बाहर एयर है। और ये जो ग्लास है इसका, ये जो प्रिज्म जिससे बना हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब मुझे फाइनल दो ना, जल्दी दो यार। Should I say? या Mu by 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? sin R2 by sin E. ओके कावेरी, यू टेल मी व्हाट हैव यू गॉट? Yeah, if mu1 is 1, because that's the refractive index of air. Then Oh, sorry. अरे यार, which one is mu2? Like air का कौन सा ये mu? म्यू है, ये म्यू है, जिसका जिस मटेरियल से बना हुआ उसको म्यू बोलेंगे ना। व्हाट डू यू मीन बाय व्हिच वन इज व्हाट? इसमें Oh, एक ही like चीज है, ये ग्लास है, ये प्रिज्म जिससे बना है ये म्यू का है, बाहर कुछ नहीं है। अब मुझे जल्दी रिलेशन बताओ ना। Sin R2 नहीं by वेट sin E. आर्या वेट लेट मी आस्क कावेरी। कावेरी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ yeah, जल्दी बताओ। sin R2 by sin E is equal to व्हाट mu इज द naught. इक्वेशन दैट यू हैव रिटन? mu1 sin R2 is equal to म्यू1 नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे, म्यू है।
mu sin R2 is equal to sin E. हाँ ठीक है, म्यू साइन R2 इक्वल्स टू साइन E, सो म्यू इज इक्वल्स टू साइन E बाय साइन R2. By sin R2. ओके ओके, तो ये रिलेशन भी हमें मिल गया. अब ये वाले को देखो, AQOR, यहाँ पे ये जो OQ है ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, एवरीवन स्पीक अप. Including R1. नहीं, ये पूरा एंगल, ये पूरा ड्रॉ करो, ये एंगल कितना होगा जल्दी बताओ. जल्दी बताओ. 90. 90, बिकॉज ये नॉर्मल है. सिमिलरली ये भी नॉर्मल है, तो ये भी 90 हो गया. ठीक है, इसका मतलब ये 90 90 180 हो गया, और ये तो क्वाड्रिलैटरल है, इसको टोटल एंगल 360 होना चाहिए, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ कितना हो गया, 180. 180 हो गया. 180. बट R1 प्लस R2 प्लस एंगल ओ कितना हो गया, 180. 180. मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ए. तो ये रिलेशन भी हमें मिल गया. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके बड़े सारे रिलेशन बन जाएंगे, और फाइनली तुम्हें ये मिलेगा. तो हमने अभी क्या किया था, ये देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये TQ और R है ना, TQR, राइट. तो इसका ये जो डेल्टा है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये दोनों का, है ना. अब ये एंगल कितना, I माइनस R1, ये E माइनस R2, राइट. तो डेल्टा विल बी इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, विच इज I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, and R1 plus R2 we had proven that it is equals to A. So angle D deviation will be I plus E minus A. ठीक है, ये इसका प्रूफ हो गया, I plus E minus A. ठीक है, ये फॉर्मूला है, लिख लो उसको. उसका डेरिवेशन भी खुद से ही कर लो, मतलब अभी मैंने समझा दिया कैसे करना है. ठीक है, done guys. Now for small I, for small angle of incidence, mu is equal to sin I by R. तो for small I and small r, sin I is equals to I, sin R equals to R. तो यहाँ पे इसको फिर ऐसे करोगे तो it will come to this. For small angle of incidence, delta will be equals to mu minus 1 into A. इसका भी ये डेरिवेशन नोट कर लो, ये वाला हो जाए तो हाथ उठा लो.
Done. So can you scroll up? Which part? How the angle thing was written. Which angle? No, up. Yeah. और थोड़ा ऊपर. The list. खुद से करो ना ये वाला, अभी तो बताया था कैसे करो. No, so I'll write 1 second. ये बुक तो मैं भेज दूंगा तुम्हें, खुद से अभी खुद से करोगे तो ये बेटर इम्प्रिंट होगा तुम्हारे दिमाग में. कैसे करना है बता दिया मैंने, खुद से करो. इट्स नॉट इवन डिफिकल्ट, इट्स इजी. इनफैक्ट बुक भेज दी है मैंने, कल भेज दिया था ग्रुप पे. So just scroll. Where? Down? Which part? Tell me. Oh yeah. Yeah, down. So can you scroll up 1 second? ऊपर. बट क्या क्या नोट करो तुम, खुद से क्यों नहीं करो? विच No, पार्ट? I just wanted to see. हाँ, दैट्स गुड. खुद से कर लो, फिर देख लो इधर कि ऐसे ही किया है.
ऐसी ना कल 6:30 6:15 तक आ जाना. ओके बाय. डन. Yeah. Can you scroll a bit किधर कौन सा down? डाउन ये So Kaveri, what's the formula for deviation, angle of deviation in a prism? What? अच्छा unmute करके रखना अभी. What's the Yeah. formula for angle of deviation in a prism? I plus E minus R1 plus R2. मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला नोट, दो ही फॉर्मूला नोट करने बोले थे. उसमें ये एक पहला फॉर्मूला था D is equals to I plus E minus A. हाँ, like R1 plus R2 is A, so But yeah. R1 plus R2 कैसे निकालोगे भाई? तो अब प्रिज्म हाँ? है, प्रिज्म है. Yeah. तुमने लाइट डाली तो तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है. जब बाहर निकली तो एंगल ऑफ इमर्जेंस पता है और एंगल ऑफ प्रिज्म पता है. उन चीजों से निकालोगे ना जिन चीजों जो चीजें पता है. R1 तो उसके अंदर हो रहा है, R1 कैसे निकालेंगे? पर हमने डेरिवेशन तो ये उससे निकाला डेरिवेशन में. भाई डेरिवेशन में फाइनल फॉर्मूला ये है ना, ये Yeah, but under we got R1 plus R2 ना. अंदर तो बाकी चीजें भी है, ये भी लिख दो फिर यहाँ पे. हाँ, but that's why we substituted ना A का value. यार जो फॉर्मूला पूछा है वो फॉर्मूला बताओगे ना, तो उसका डेरिवेशन थोड़ी बताओगे. Yeah, okay, When minus somebody A. asks you angle of deviation, you will say I plus E minus A. Yeah. And when the angle I is less, what is the formula? I don't know. ये दूसरा फॉर्मूला, बस दो ही फॉर्मूले तो है. This I didn't get to noting that. I was still writing that. One second. हाथ उठा लेना जब हो जाए, तुम लोग का नोट करना. सबका हो गया. कावेरी योर्स इज पेंडिंग. 1 minute. स्वेरा वीडियो. Sir, I'll be on the video in 2 minutes. I'm eating. Okay. So angle of deviation in a prism is I plus E minus A. And when the angle of incidence is very small, then it is mu minus 1 into A. In terms of refractive angles, A is equals to R1 plus R2. ठीक है, ये तीन चीजें याद हो गई अभी. Done, sir. Okay, we'll do this question now. A thin prism of 5-degree angle gives a deviation of 3.2 degrees. What is the value of refractive index of the material of the prism? चलो. चार्ट पे दो फटाफट आंसर.
Okay, it's the so second one. okay, right, cool. 1.64 या 1.7 अच्छा, मतलब वही अप्रोक्सीमेट किया क्या? कावेरी 1.45 कैसे आया तुम्हें? Sorry, I think I made a calculation. आज क्या हो गया कावेरी? सर दुख रहा है कल हाँ, जैसे. क्या हो गया? सर दुख रहा है कल जैसे. ओह, क्या तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी? I don't know. I think my power has increased. हाँ, वो हो सकता है, बट यू डोंट हैव एनी साइनस प्रॉब्लम? No. ओके, ओके, चलो फाइन, आगे बढ़ते हैं. प्रिज्म फॉर्मूला. तो देखो, if the angle of incidence is increased gradually, then the angle of deviation first decreases, attains a minimum value, which is d minimum, and then again starts increasing. ये ड्रॉ करो उसको. ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ड्रॉ करने के लिए आ सकता है. और इसका ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी मिनिमम तब होता है जब आई इज इक्वल टू ई होता है. एक मिनिमम डेविएशन तो होएगा ही होएगा, और वो तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है. So what is the significance of this? Like, why do we want Yeah. the minimum value of deviation? आगे के फॉर्मूले बनेंगे हमारे डीएम पे. हाँ? आगे के फॉर्मूले बनेंगे हमारे डीएम पे. ओके, सो So means minimum deviation will happen when I is equal to E. या ये नोट करो. सो डी मिनिमम विल हैपन व्हेन आई इज इक्वल टू ई. अगर आई इज इक्वल टू ई है तो R1 विल इक्वल टू R2, करेक्ट. R1 plus R2 equals to A, correct. So R equals to A by 2, correct. Now we have delta is equals to I plus E minus A, है ना. यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू है dm, E की वैल्यू I, तो you get this. So from here you get this. So now look here, why you needed dm. So dm for a prism is constant, minimum angle of deviation is constant, क्योंकि deviation तो चेंज होते रह सकता है जैसे तुम I को हिलाते रहो, है ना. बट मिनिमम डिविएशन हमें पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी पता है जो कि कांस्टेंट है, तो यहां से बन जाएगा म्यू. तो दिस इज अ फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन नोट करो. चलो, हो जाए तो हाथ उठा दो. कितनी जल्दी नोट हो गया आर्य? सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं, डेरिवेशन. ओके,
कावेरी का भी हो गया, और स्मेरा एंड सिया पेंडिंग, सिया का भी हो गया, स्मेरा का भी हो गया, ठीक है चलो। ओके, एंड फॉर वेरी थिन प्रिज्म्स ए प्लस, सो थिन प्रिज्म में ए की वैल्यू बहुत छोटी है, डीएम की वैल्यू भी बहुत छोटी है, तो साइन ए प्लस डीएम बाई टू कैन बी रिटन एज ए प्लस डीएम बाई टू, दिस कैन बी रिटन एज ए बाई टू, राइट। सो अगेन यहाँ से यही आंसर आएगा जो कि अपना पहले भी था, है ना, d इक्वल्स टू म्यू माइनस वन बाई ए फॉर थिन प्रिज्म्स, दैट इज द कांस्टेंट। चलो ये वाला सवाल सॉल्व करो। A ray of light suffers minimum deviation when passing through the prism of refractive index 1.5 and refracting angle 60, मतलब R 60 है, calculate the angle of deviation and angle of incidence। Right before this example, the formula is same only, na? Except it's for minimum deviation. Which formula? It's mu minus 1 into a. It's the same thing only, na? For thin prism, that's what it's proving. So for thin That prism, we take the minimum deviation and then it will be the same formula. नहीं भाई, ये यही प्रूफ कर रहा है कि थिन प्रिज्म के केस में पहले भी वही फॉर्मूला आया था, म्यू माइनस वन इंटू ए, और ये डीएम वाले फॉर्मूले से भी सेम ही आ रहा है। अच्छा, ओ, ओके। What is इसका क्या A? हुआ? ए, Yeah, angle of prism. हाँ, एंगल ऑफ प्रिज्म, बट आई थिंक शी इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज ए, राइट? Yeah. Who is Yeah. asking? सिया। Yeah. देखो a इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 होता है ना, Hmm. यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया हुआ 60 है, Yeah. और मिनिमम डिविएशन का केस है, मतलब दोनों रिफ्रैक्टिव एंगल 60-60 होंगे, 120 Oh, degree. okay. Yeah. तो a will be 60 plus 60। So could you say that again? a is equals to r1 plus r2। Yeah. ये जब मिनिमम डिविएशन होता है तो r1 r2 इक्वल है, बिकॉज i Oh, right. Minimum deviation. Yeah. Got it. या
दो आंसर, इतना क्यों टाइम? How long, guys? Arya has given her first answer. बाकी लोग क्या हो गया? I am not getting where to use 0.75. I'm not getting 0.75. Yeah, Yes. same. Arya, where do you get? I didn't use that either. I got 1 point. Wait. Yeah. After you get sine I is equal to 1.5 sine 30. So sine 30 How you is. got sine 30? Why sine I? So you have to use A का formula ना. A by 2 वाला formula होगा ना. So Okay, first you will use like angle of deviation is you'll get r is equal to a by 2, right? yeah, Then you'll get a r as 30. So but then it is A as 120, na? So 120 by 2 will be 60. why 120? A So will be it's 60 plus 60 ना 120. Yeah, 60 plus 60, 120. Cool. Refracting angle here is the angle of prism. So Arya, how did you get it? So these guys got stuck. Understandable. How did you get it? Oh, because you said that r1 plus is equal to r2, so I just assumed that it's equal to a. Is equals to 120 होएगा ना? Right. यहाँ पे refracting angle they have taken it as angle of prism. So that is 60 degree. So that's why they were getting stuck. चलो, fine, angle of prism 60 लेके solve करो if you're getting it now. I'm getting something really weird. Angle of prism 60 लेके solve करो ना. हाँ. Yeah, if we take 60, then we'll get sine inverse of 0.75 only. So we can use this. Yeah. So here refracting angle is angle of prism is what they mean by that. How are we supposed to figure that out? We should not. They should clearly write it should be angle of prism, because a refracting angle could also be the angle of refraction if somebody could confuse. Done? Cool. ठीक है. 37.2. The angle of incidence is this. Fine. Everybody is getting it. Dispersion by a prism. पहले पढ़ा होगा तुम लोगों ने कभी कि प्रिज्म में लाइट डिस्पर्स क्यों होती है? Any idea? Why?
7 कलर्स में क्यों डिवाइड हो जाती है लाइट? Because probably because they have different They have different Exact- wavelengths. wavelengths, so they get deviated by different angles, because of which they all get separated, like the constituent colors. Correct. Okay. ठीक है. When a narrow beam of light, blah blah blah. Okay. Newton's experiment to explain the dispersion of white light. Okay. Cause of dispersion. The different colors of white light have different wavelengths. The wavelength of violet is smaller than that of red. Okay. Refractive index of material of prism is maximum for violet and minimum for red. Okay. So the refractive index is maximum for violet and minimum for red. So angle of deviation अलग अलग हो जाता है. ये नोट करो. Cause of dispersion. Done. बस इतना ही नोट करना है. Mu of V is greater than mu of R, because of which deviation of V is greater than deviation of R. So violet will deviate more than red. Why only for small angled prism? Because उसका फॉर्मूला हमको डायरेक्टली पता है ना. It will happen for any prism, but वो वाला फॉर्मूला यूज करके हम अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे. Okay, the Zoom is going to shut off now, so we'll restart. But ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यू किसका ज्यादा किसका कम, उसके कारण डिविएशन किसका ज्यादा किसका कम, ये पता होना चाहिए.